Hello friends, welcome back to Let's Grow Up Premier Launch video. Once again, you all are welcome, and today's topic is this is a control panel of LHB, which is a part of a braking system in LHB Coach. But today I will share its pipeline. Pipeline means its input connection and output connection. In this view, it is very difficult to learn it the input connection and output connection. इसलिए सबको एक प्रॉपर व्यू में ले जाएंगे जहाँ पे अब सब लोग इसका जो कनेक्शन है इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन तो उसको सीख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So this is the proper view where you can see the connection. So it is very easy in this 3D view and really helpful video. I hope it is very helpful video. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कनेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि ग्रीन पाइप मीन्स बीपी पाइप. ग्रीन पाइप मीन्स बीपी पाइप. मैंने इसको कलर करके डिफ्रेंशिएट किया सो दैट कि जैसे ही हम ग्रीन पाइप देखेंगे तो हमारा जो दिमाग है वहाँ पे ये क्लिक करेगा कि ये बीपी पाइप है. ओके, सो ग्रीन पाइप मीन्स बीपी पाइप, ब्रेक पाइप. ओके, दिस वन इज एपी यानी फीड पाइप. सो बोथ आर डिफरेंट. वन इज BP pipe. Here you can see the BP pipe and also this one feed pipe. So these two connection is input connection. Here you can see with the help of T joint both these connection are connected, and rest one are the output connection. And these two pipes are for the both bogie. You can see the left bogie and the right bogie. So these two connection is the output connection. Here you can see the output connection for the left side bogie and the right side bogie. Here you can see the right side bogie. Through this drum valve the connection is passing to the bogie and its brake caliper assembly, to the brake caliper assembly. So दोनों ट्रॉली के लिए दो कनेक्शन यहाँ पे आउटपुट हुआ है. So now you can see these two connection for both बोगी के लिए और ट्रॉली के लिए. दिस कनेक्शन फॉर ये जो कनेक्शन है ये जो अलार्म चेन है जो कोच में रहता है, चेन रहता है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है. ओके, सो हो गया. एंड नेक्स्ट यहाँ पे यू कैन सी दिस टू 10 mm पाइप फॉर द इंडिकेटर फॉर द बोथ ट्रॉली. Okay, here you can see the indicator. So here you can see the indicator for left side indicator for the left bogie and the right side indicator for the right bogie. So these are the connection. Here you can see the two input connection. Once again friend, very important topic, and this is the view where you can see the proper connection pipeline system from this control panel, which is very important. So if you miss this video, I don't know what will happen. दो इनपुट कनेक्शन है जो BP पाइप और फ्रॉम द AP पाइप, फ्रॉम द BP पाइप एंड फ्रॉम द AP पाइप. Here you can see I am selecting the pipe so that you will get the point. Okay, two input connection and rest all are the output connection. Here you can see at first alarm chain के लिए these two pipes are both bogie, जो कैलिपर ब्रेक सिस्टम है बोगी में वहाँ पे जा रहा है ये. एंड रेस्ट ये जो पाइप है, ये पाइप यहाँ पे यू कैन सी दिस द इंडिकेटर फॉर किसके लिए, बोथ बोगी के लिए, राइट साइड बोगी एंड लेफ्ट साइड बोगी. ये दोनों बोगी में जो ब्रेक अप्लाई हुआ है कि नहीं इसके लिए जो इंडिकेटर होना चाहिए तो इसके लिए ये यूज़ होता है. सो दीज आर द कनेक्शन. ओके, सो दीज आर द कनेक्शन फ्रॉम द कंट्रोल पैनल. I hope कि this video will help you to learn about the connection. If you watching this video or if you like this video, please share your comment, and in the next video we will learn about the component and parts and its role. So I will meet another session. Till then, take care. Tata, bye.